बॉयज़ एंड गर्ल्स वेलकम। आज एक बहुत सिंपल सवाल है which I consider a litmus test for anybody who is remotely associated with computer science. क्वेश्चन ये है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, ठीक है, और आपने उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हर न्यू ग्रेजुएट should be able to knock down this question in say less than 10 minutes. 10 minutes भी ज़्यादा है, इतना सिंपल सवाल है। और अगर कोई बंदा ये नहीं कर सकता, from my yardstick, he is a or she is an outright reject. थोड़ा हार्श है जो कह रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इतना सिंपल सवाल है कि एवरीबडी शुड बी एबल टू डू इट। सो लेट्स क्विकली सी कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि reverse a string. So let's say you are given a string A, B, C, D. So you need to return back D, C, B, and A. So ये reverse होगी string. Um, जो जाहिल लोग हैं वो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि आपको स्ट्रिंग दी गई है, they'll declare, let's say the string is s, they'll declare s prime, ठीक है, और इसके कैरेक्टर्स को वो उल्टा कॉपी करना शुरू कर देंगे। वो यहाँ से एंड से स्टार्ट करेंगे और इसको डी सी। द प्रॉब्लम विद दिस इज कि इफ दिस इज स्पेस इज ऑर्डर एन, इफ देर एन कैरेक्टर्स, तो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एक और ऑर्डर एन की स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, द स्पेस और टू ट्वाइस ऑफ एन। So this is not really a good solution. So what you really need to do is think of a solution where you don't need to basically make a uh, string. So the idea is very simple. ठीक है, idea ये है, um, let's say you have a variable, integer variable, ठीक है, s is for start, so it points at the beginning, and the trick to doing this question in place is having an end pointer which points at the end of the string. So let's say that आपके पास string str है, so you do length, but this won't work. Don't forget to do a -1. So what we are saying is कि हमारे पास a, b, c और d पड़े हुए हैं और हमने एक पॉइंटर यहाँ रखा है which is start, और एक पॉइंटर हमने यहाँ रखा है which is end, and these are indexes 0, 1, 2, 3. So now हम क्या करेंगे कि हम एक while loop लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि स्टार्ट जो है वो जब तक एंड से छोटा है इस लूप को रन करते रहो, एंड वी विल हैव ए कैरेक्टर, लेट्स कॉल इट सी या टेम्प, वट एवर यू विश, और हम स्टोर करेंगे स्टार्ट का एलिमेंट। Now what we can do is we can overwrite string start with string end, and then string end with जो हमने temporary variable रखा है this, but don't forget to increment start and decrement the end, ठीक है। So this is basically the meat of the solution. Before this loop you need to check कि कहीं string जो है वो null तो नहीं है, और दूसरा चेक आपको ये करना है कि अगर string की length, it could be an empty string like this in Java, which would be length would be 0, or it could be a single character string, जिसके केस में
the reversal really doesn't mean anything. So आपने चेक ये करना है कि लेंथ जो है वो लेस देन 2 अगर है तो you can just return at the start of the function. Another issue is Java में strings are immutable. So you cannot really change this string. ठीक है. So you need to make a copy. Generally interviewers जो पूछते हैं they give you a character array. ठीक है. But since we are sticking to lead code problems, lead code में this is given as a string. So you need to convert it into a character array and then return a string. Uh, complexity of this algorithm is order n. Why? Because ये जो while loop है ये in the worst case एक दफ़ा चलेगा. लेट्स जस्ट सी कि ड्राई रन में क्या होगा. पहली इटरेशन में हम ए को ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा. दूसरी इटरेशन में बी की जगह सी और सी की जगह पे बी. जब भी स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं थिंक अबाउट के सो राइट नाउ मैंने पॉइंट आउट किया आप लोगों को कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज स्ट्रिंग्स. नल भी आ सकता है. there's null, then there's the empty string, and then there's a string with a single character. एक चीज़ और जो आपको माइंडफुल होना होगा it is कि does even or odd number of characters make any difference. in our case it does not. let's say अगर हमारे पास यहाँ f होता, ठीक है, तो s ये start और ये end, they'll basically be pointing at the same location and the loop will break. So the important thing is कि ये जो condition हम लिख रहे हैं this should not be equal to, this should be less than. So even if, by the way, what will happen अगर equal to कर देंगे तो basically ये f को f ही की जगह पे लिख देगा, right? because c में f आ जाएगा, ये जो temp हमारे पास है variable, और हम basically f को f में ही write कर देंगे. But there would be an extra iteration, so this shouldn't be there. लेकिन odd or even characters इस case में they don't make a difference. So let me show you the code. So this is the code I wrote, and this is available again on GitHub. It passes with 100% better performance in lead code. Lead code में you can actually look at कि आपका जो solution है how does it compare to other submitted solutions. तो look at here. यहाँ पे मैंने string इसलिए किया है क्योंकि lead code जो होता है वो that is asking for a string, उसमें signature ही है. So you see कि ये string आया, I make a check at the top कि null तो नहीं है, और अगर length जो है वो less, then I just return the string. Then I convert it into a character array. Don't forget to do a -1 on line 14, otherwise you'll get a out of bound exception for the array. ये while loop है. Again, don't forget to increment and decrement, start and end appropriately. और finally हम यहाँ पे दोबारा string को, नई string को return करते हैं. So इस case में basically we are not really doing in place because string जो होती है Java में immutable है. आप उसको immutable का मतलब ये है कि you cannot change the object once it's created.